the nation. It is the true mother bird of our rural sector, sir. Development and supporting the very foundation of our nation wealth. However, the financial framework under the NABARD operates severely restricts its ability to fulfill its mandate. The imposition of tax like income tax on NABARD. NABARD operation drains resources that should directly uplift rural communities. I urge the government to remove income tax imposed on NABARD, sir. Additionally, the allocation for the Rural Infrastructure Development Fund, that is RIDF, managed by NABARD, must be substantially increased. The RIDF is crucial for rural infrastructure, market access and irrigation. Yet, its current allocation is inadequate, sir. Moreover, RIDF resource must be exclusively directed toward agriculture and rural development, sir. While MSME, NHB and SIDB are important, they come at NABARD expense, sir. NABARD needs higher budgetary support and greater autonomy and investment in people. Sir, I urge the government to remove NABARD's income tax burden, increase the RIDF allocation and empower NABARD to drive rural wealth. Strengthening NABARD means strengthening our nation, sir. Thank you, sir. श्रीमती सुलादा देव जी। जय श्री जगन्नाथ। थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर, मुझे आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में बोलने का मौका दिए। हम आए दिन देखते रहते हैं कि कहीं रास्ते पर गाय हो, कुत्ते हो, बंदर हो, बिल्ली हो, इस तरह से एक्सीडेंट से या किसी भी तरह से घायल पशु पक्षी रास्ते में रहते हैं, रास्ते में पड़े रहते हैं और कितने का तो ऐसे कीड़े भी लग जाते हैं। मगर सर, अगर इंसान का कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत ही हम लोग एम्बुलेंस को कॉल कर लेते हैं और उसको उठा के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मगर पशुओं का क्या है? पशुओं के लिए कहाँ कोई अगर दयालु अगर कोई इंसान दिख भी जाए मगर उसके पास ऐसा नहीं है कि कहाँ वो फोन करे, कहाँ से वो एम्बुलेंस है। तो जो इंसान होते हैं वो हेल्प करना चाहते हैं मगर हेल्प नहीं कर पाते। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा सर सरकार को कि हर जगह पे, हर जिले में, हर स्टेट में जिस तरह से इंसान के लिए एम्बुलेंस का सेवा है, जिस तरह से इंसान का हॉस्पिटल से, जिस तरह से इंसान के दवाई हर जगह पर मौजूद रहती है, उस तरह से एनिमल लोग का भी रहना चाहिए, पशुओं का भी। पशु चाहे किस तरह की भी हो, वो स्ट्रे हो, पालतू हो या फिर पशुधन हो। मैं मेरे नेता नवीन पटनायक को इसलिए इतना प्यार करती हूँ, इसलिए इतना मान देती हूँ कि जब कोविड था पशुओं को खाने के लिए वो सोचे। हमारे उड़ीसा में एक 24/7 आवर्स का एक पशु हॉस्पिटल भी
कार्यरत है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर रात में और छुट्टी के दिनों में कहीं पशुओं का हॉस्पिटल ठीक से खुला नहीं है, इससे गवर्नमेंट को देखना चाहिए और सारे जगह में एक इमरजेंसी नंबर भी होना चाहिए और पशुओं को किस तरह से ट्रीट किया जाए। हम शांति का हम देखे हैं आलोका, जो आलोका बहुत कुछ हमको सिखाया। एक इंडी डॉग जो कलकत्ता से 3700 किलोमीटर भी चल रहा है, टेक्सास से लेके वाशिंगटन तक, ये शांति ये कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। क्या पशु अगर शांति स्प्रेड कर दे, पशुओं का फिर देख रेख, फिर उनके जान माल की चिंता कौन करेगा? गाय हमारी माँ है, मगर डायरी फार्म वाले दूध लेके गाय को रास्ते के ऊपर छोड़ देते हैं मरने के लिए। हम जो गाय पालते हैं वो भी वही करते हैं, मगर फिर अगर उनको एक्सीडेंट होता है, किस तरह से भी कुछ होता है, तो फिर उनका देखभाल कौन करेगा? ये सरकार का जिम्मेदारी है। एक इमरजेंसी नंबर, जिसको आंख बंद हो जाए तो सरकार का इमरजेंसी नंबर सबको याद हो और वो पशुओं के लिए हो, और पशुओं के लिए एम्बुलेंस हो, पशुओं के लिए हर जिले में 24/7 आवर का हॉस्पिटल हो, तब जाके हम इंसानियत का ये दिखाएंगे। बस पशु है जो ना, वो वो हमको बहुत सारे इंसानियत सिखाते हैं। हम इंसान आजकल इंसानियत भूल रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा सर, पशुओं के साथ हो रहे क्रूरता को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि पशुओं के ऊपर हो रहा क्रूरता को लेकर गुप्ता जी। आदरणीय सभापति जी, आपका आभार। मैं महिला सशक्तिकरण से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण महिलाओं और सूक्ष्म उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, वस्त्र, स्थानीय उत्पादों एवं सेवाओं के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दे रही हैं। किंतु इन महिलाओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है अपने उत्पादों की व्यवस्थित बिक्री, ब्रांडिंग और उचित मूल्य प्राप्त करने की उनके पास बड़ी चुनौती है। निजी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक कमीशन, जटिल नियम, तकनीकी कठिनाइयाँ और लॉजिस्टिक खर्च छोटे उत्पादकों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ी बाधा बन रही हैं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन पूर्वक आग्रह करती हूं कि वह एक समर्पित सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की स्थापना करें, जिससे विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों, कुटीर एवं ग्राम उद्योगों के उत्पादों की बिक्री के लिए हो और जिसमें न्यूनतम कमीशन लिया जाए। साथ ही ऐसे प्लेटफॉर्म के संचालन हेतु एक पूर्णकालिक प्रशिक्षित और पेशेवर टीम का गठन किया जाए, जो उत्पाद
ऑनबोर्डिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑर्डर प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स में महिला समूहों को निरंतर सहयोग प्रदान करें। माननीय सभापति महोदय जी, ऐसे समर्पित व्यवस्था से महिलाओं को तकनीकी निर्भरता से मुक्ति मिलेगी, बिचौलियों की भूमिका घटेगी, उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी और वोकल फॉर लोकल तथा लखपति दीदी जैसे अभियानों को वास्तविक मजबूती मिलेगी, जिससे महिला नेतृत्व में श्रीमान मुकुल बालकृष्ण वासनिक जी। Thank you, Mr. Chairman. I wish to draw the attention of the government to an important matter and hope that the government takes it seriously. Just as the economic survey is laid on the table of the House one day prior to the union budget, India should ओम शांति। अब हम उठते हैं कल सुबह 11 बजे। level impact of affirmative action and schemes for empowerment of disadvantaged sections. 3. Socio-economic gaps. Examining disparities in education, employment, median income and poverty levels across different social segments. Why is it that we still have huge backlog in the employment of reserved category persons, and what needs to be done? Why is it that there still exists a huge gap in educational levels of children coming from disadvantaged categories? Number 4, providing essential services. Assessing the reach and quality of healthcare and housing for vulnerable communities, it needs to be examined that why the deprived sections of our society are still getting deprived. Political and social inclusion, measuring the participation of SC, ST, OBCs, minorities, women and economically weaker sections in political processes from voting to holding offices while identifying systemic barriers to social mobility. Accessibility of persons with disability should also form part of this report. And I would like to conclude by recalling the words of Dr. Ambedkar. How long we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting Venkata Satyanarayana Garu. Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving me the opportunity. I wish to draw the attention of the August House to an important constitutional policy issue
identification of minority. As and when the India has acquired its independence, such communities which has been said to be categorized as minorities, after more than 7 decades, still today, the number has been doubled and increased, which can influence so many constitutional bodies for a system of the electoral reforms. Originally, the backward classes who are said to be under the category of nodamic or semi-nodamic and denotified tribes who have been marginally very weaker section, who are very numerically less in number and also very less in income, who doesn't have minimum needs for their daily taking their livelihoods, they have been kept under categories of backward class and other sections. They are the original minorities as per the recent statistic which has been prescribed in the constitution by way of IN number or through their habitations or whatsoever it may be. So I would like to add through you to this government to have once again to recall the original minority, under what category does the minority, what is this, the importance of minority, how it can be defined, and what are the sections that can be conferred under the minority groups. So these things should be, once again, it has to be examined by the concerned ministry so that the original backward classes, people who are originally weakened by the system, they can be get strong and the social justice can be implemented so that the, as per the intention of Dr. Baba the intention of Antyodaya, the member who are originally marginalized can be having an equal status and who can uplift to the society, where thereby we can have a Vikasit Bharat in this context. So I urge the government through you to look forward under these circumstances. Thank you. Thank you. श्रीमान बिजलाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं देश के उन किसानों की बात उठाना चाहता हूं जो स्पेशलिटी राइस पैदा करते हैं। महोदय, अभी तक कॉमर्स मिनिस्ट्री जो वर्गीकरण किया है चावल का, उसमें है बासमती और देश में आपूर्ति बढ़ानी होती है और जो एक्सपोर्ट रुकता है नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट रोक दिया जाता है और उसमें फिर सफर करते हैं वो किसान जो राइस पैदा करते हैं। मेरी मांग है महोदय कि चावल का जो कॉमर्स मिनिस्ट्री वर्गीकरण करे वो करे बासमती, और कॉमन राइस। महोदय, तमाम चावल ऐसे हैं जैसे बिहार का कतरनी है जो मुंगेर, भागलपुर, बांका में पैदा होता है, बहुत अच्छा चावल है। और इसी तरह आसाम का है जूही, जोहा चावल, आसाम का जोहा जो ब्रह्मपुत्र वैली में पैदा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है और काफी पसंद किया जाता है। बंगाल का वहां पर है गोविंद भोग और विष्णु भोग, और वो भी काफी स्पेशलिटी राइस है और अब तो बिहार और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और इसी तरह महोदय गुजरात का है
कृष्ण कामोद, ये भी स्पेशलिटी राइस है। और महोदय, मैं रहने वाला हूँ यूपी का सिद्धार्थनगर का, और वहाँ का राइस है काला नमक। काला नमक राइस बुद्ध काल का है और उसको बुद्धा ब्रांड से एक्सपोर्ट हो रहा है। और इस साल महोदय मैं योगी आदित्यनाथ जी का साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा और 11 जिले जीआई जोग्राफिकल इंडिकेशन में है। ठाकुर मंडल, बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल, और खेत से 15,000 रुपया कुंटल चावल में बिक गया है देखते देखते। जब ये चावल का एक्सपोर्ट नॉन राइस के नाम पर रुकता है, तो ये किसान जो स्पेशलिटी राइस पैदा करते हैं वो सफर करते हैं। काला नमक राइस दाल का है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55, जिसको हम कहते हैं शुगर फ्री, 49 है। उसमें जिंक 4 टाइम, आयरन 3 टाइम, और वही एक राइस है दुनिया में जिसमें विटामिन ए है, में प्रोटीन डबल है। तो महोदय मेरा ये कहना है कि ये ऐसे राइस हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी में रखा जाए, क्लासिफिकेशन हो, और इन जो स्पेशलिटी राइस है उनको डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया जाए। जैसे बासमती के लिए है बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन मेरठ में, उसी तरह से स्पेशलिटी राइस का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। सभापति महोदय, कोला बाबूराव गारू। Sir, thank you, sir. I want to bring to Honorable Chairman, sir, and to the August House, very sorrowful issue what is going on in India. Appeal to increase the pension and social assistance program to elderly BPL people. Sir, social care is the crucial part of any government to provide much needed support to old people who need assistance for the survival and daily needs. The old age pension scheme is significant step towards the fulfillment of the directive principles of the state policy, which mandates upon the government to undertake welfare measures. No doubt, the government of India is implementing government of India scheme. It is one of the 5 sub-schemes of the NSCP under National Social Assistance Program that provide monthly pension to BPL senior citizens. But sir, the most unfortunate part is that government of India is providing only just 200 per month per pension to BPL senior citizens of the country. The second painful fact is that
the current system of determining the benefits is realized on the equity, just the present day socio-economic realities, thereby excluding substantial number of their genuinely eligible individuals. The third painful fact is that union government has capped the number of the beneficiaries from all states at 3 crores when country has only 15 crore population. The fourth painful fact is that budget for this has been stagnant since 2015-16. I am not saying that all 15 crores are eligible, but sir, as per estimates, around 5.1 crore elderly people are under BPL category. So all these who are eligible should be provided financial assistance under the government of India schemes. The government of India giving it to only 3 crore people, thereby depriving more than 4 people for financial assistance. The point is 200 given by government of India is too low. It was last enacted more than 1 decade ago. So there is an urgent need to increase the amount from 200 to at least 1,000 per month. Thank you. Through yes, Selva Ganapati ji. Chairman sir, I rise today to draw the urgent attention of this August House to a matter of deep concern affecting our senior citizens. The central government health scheme has implemented for pensioners in the Union Territory of Puducherry. The issue is that the CGHS was envisioned as a lifeline for retired government servants, ensuring that their medical needs are met with dignity and efficiency. However, in Puducherry, the scheme currently covers only 2 empaneled hospitals, though there are 6 medical colleges with hospitals. Jipman Hospital, which is a central government institution, is not in the list. It severely restrict access for pensioners. Many of them are aged and frail. The present system requires pensioners to first obtain approval from the CDHS center and then seek treatment only in the approved list of hospitals. This bureaucratic process causes delay in medical care, which is particularly burdensome for elderly patients. The serious human impact is that they imagine an aged pensioner in large cities
like suffering from a sudden cardiac problem or recurring dialysis. Instead of going to the nearest hospital, they are forced to search for CGHS center and navigate administrative hurdles. This is not just inconvenient. It is the matter of life and death. The very purpose of CGHS is defeated if access to timely treatment is compromised. Pensioners who have dedicated their lives to the nation should deserve seamless care without procedural delay. The hospitals are not interested since the rates in their opinion are not remunerative. Further, the rates are not revised annually commensurate with the rise in cost of the maintenance. Another important reason is that the payments from the CGS are delayed due to procedural and administrative problems. This broader vision is that the health care is not a privilege, but it is a fundamental right. By strengthening CGHS in Puducherry, we set a precedent for other regions where similar gaps exist. Strongly urge the central government to expand the ambit of CGHS in Puducherry by bringing all hospitals in the Union Territory under the empaneled list. This should ensure that the pensioner can श्रीमान avail कार्तिकेय शर्मा जी। Thank you, Chairman, sir. I want to address a digital frontier that is full of promise as if peril. I'm talking about the world of electronic gaming. As we march towards the vision of a Viksit Bharat in 2047, we must recognize the orange economy, our creative and digital sector is no longer a peripheral industry. It is a vital pillar of our 1 trillion digital economy goal. Currently, India's creative economy is valued at approximately $30 billion, contributing to nearly 8% of our working population. However, sir, we must distinguish between two very different realities within the sector. Sir, on one hand, we are witnessing the crisis of unrelated amateur gaming and its impact. The sprawling nature of unregulated amateur online gaming has led to grave repercussions. We all have heard the heart-wrenching stories of young children driven by gaming addiction, descending into spirals of self-harm, as we saw in incidents that happened recently, the unfortunate incident where 3 young kids lost their lives. Clinical studies now show a direct link between excessive unregulated gaming and the rise of ADHD, acute anxiety and depression amongst our children and youth. Sir, as a parent, not merely as a member of parliament, I request the government to regulate the entire ecosystem from game development to streaming, mandate game audits to ensure these digital spaces are safe for our children. So, while we create a safe and a conducive ecosystem,
On the other hand, there is a potential of professional e-sports largely which remains untapped. So we have millions of serious, highly skilled electronic gamers who are passionate about this craft. India now boasts of 500 million amateurs, the largest gaming audience in the world, and lakhs of professional gamers. Our gaming market is valued at about $3.7 billion right now, is projected to soar $10 billion by 2030. Recently, the AVGC sector alone require roughly about 2 million skilled professionals by 2030. It's a great opportunity for our youth, for employment particularly. To unlock the full value of gaming, design, development, professional leagues, I urge the government to grant official sports status to esports, as they are also being accepted by international competitions, Olympics, and other bodies. This will provide our youth with a structured, legitimate career path while positioning Bharat as a global leader in the digital economy. The budget's proposal to set up VGC content creator labs in 15,000 secondary schools is the right start for our youth, Yuva Shakti, in the right direction. Sir, it's a very important area. Thank you very much. श्रीमान सतनाम सिंह सांधू जी। थैंक यू सो मच सर। सर मैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की एक कॉमन डिमांड सदन के सामने रखना चाहता हूँ। वो डिमांड है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन, सिंगापुर और वैनकूवर के लिए कुछ नई फ्लाइट शुरू करने के लिए। चेयरमैन साहब, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने के एविएशन सेक्टर में बीते एक दशक में बेमिसाल एक्सपेंशन देखा है। साल 2014 में जहां देश में केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, वहीं आज ये संख्या 163 को पार कर गई है। आज पंजाब के पास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, चंडीगढ़ और अमृतसर, और 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। और सर, हम भारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुरु रविदास जी की जयंती पे पंजाब आए फर्स्ट को, और उन्होंने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत श्री गुरु रविदास जी के नाम पे रखने का बहुत बड़ा ऐलान किया और पंजाबियों की भावनाओं का सम्मान किया। और दूसरा गिफ्ट सर दिया प्रधानमंत्री जी ने हमें लवारा एयरपोर्ट लोक अर्पण किया गया। पंजाब को बहुत मिला इस ग्रोथ में, लेकिन पंजाबियों का दिल जैसे कि दिल मांगे मोर, हम चाहते कि हमें और मिले। और मेरा निवेदन कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से दुबई और आबू धाबी के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी 60 लाख पैसेंजर को हैंडल करने की है। अभी 35-40 लाख की कैपेसिटी पे वो एयरपोर्ट काम कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि एयरपोर्ट अंडर यूटिलाइज है। अगर यहाँ से सिंगापुर, लंदन और वैनकूवर के लिए फ्लाइट शुरू होगी तो बहुत बड़ी सुविधा होगी।
और इसके लिए मेरा निवेदन है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉल की सूची में इस एयरपोर्ट को शामिल किया जाए, ताकि यहाँ पे जो इंटरनेशनल कैरियर हैं, जो फॉरेन एयरलाइंस है, वो भी लैंड कर पाए और हमारी अपनी एयरलाइंस भी यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स हमें दें। और इसके साथ सर मेरा निवेदन ये भी है कि यहाँ से कार्गो की फ्लाइट्स भी बढ़ाई जाएं, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है पंजाब का है उसको बढ़ावा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रीमान मोहम्मद नजमुल हक जी। Thank you, sir. Sir, the Farakka barrage is a union project. It is controlled and operated by the union government. And yet, when West Bengal bears the devastating consequences of land erosion and siltation, the union certainly claims it has no responsibility. That is why the Farakka barrage projects authority full 120 kilometers jurisdiction must be restored immediately. In 2005, the union government accepted a basic scientific reality that a river functions as a single system. Acting on this is extended the Farakka jurisdiction to 40 kilometers upstream and 80 kilometers downstream. This decision was not